Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to read today about mountain goats. Okay, so let's start. Without wasting our time, we are taking start. Okay, mountain goats. These mountain goats live in the mountains in the USA. ये mountain goats कहाँ पे होती हैं? USA में होती हैं. If somebody asks you where mountain goats live, you can say mountain goats live in the mountains in the USA. Okay, they are very good at climbing and can jump nearly 3.5 meters. Okay, in which thing mountain goats are good? Mountain goats good at climbing, and they can jump nearly 3.5 meters. Okay, these goats are climbing down the mountains. If somebody asks you that if in page number 2021 what the mountain goats are doing, so answer is these mountain goats are climbing down the mountains. Okay, next page is mountain climbing. Mountain goats Mountain goats are very safe from animals that want to catch and eat them, as no other animal can climb as well as goats. माउंटेन गोट्स बाकी एनिमल्स से सेफ होती हैं. क्यों सेफ होती हैं? बिकॉज दे कैन क्लाइंब ऑन द माउंटेन्स एंड नो अदर एनिमल can't go there as easily as the mountain goats can go. Okay, they stay in the mountain all winter. Where they live in all winter? They live in the mountain. Mountain goats are very safe from animals that want to catch and eat them, as no other animal can climb as well as goats. Okay, somebody can ask you that why other animal can't catch to the mountain goats. We can say that no other animal we can say that other animal can't catch to the mountain goats because they are on the mountains, and no and other animals can't go there easily. And where they live in all winter, they stay in the mountains all winter. When the weather gets warm, when the weather gets warm again, the goats climb down the mountain to look for food. Okay, what happened when the weather gets warm? They get down the mountain and they look for food. They are searching for food when the weather gets warm. जब सर्दी होती है तो सर्दी में ये माउंटेन के ऊपर होती है. जब सर्दी ख़त्म हो जाती है तो ये नीचे आती हैं माउंटेन से और अपने लिए फूड तलाश करती हैं. यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि माउंटेन गोट्स माउंटेन क्लाइंबिंग में बताया गया है कि माउंटेन गोट्स सबसे बेस्ट होती हैं. अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि माउंटेन गोट्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये गोट्स माउंटेन पे रहती हैं. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. जब आपको कहा जाता है कि माउंटेन गोट्स, तो इसका मतलब क्या है कि गोट्स माउंटेन में रहती हैं और उनके साथ कुछ स्पेसिफिक है रिलेटेड टू द माउंटेन्स, क्योंकि उनके नेम से हमें पता चल रहा है कि वो माउंटेन गोट्स हैं. अब माउंटेन क्लाइंबिंग की जब बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि वो क्लाइंबिंग में गुड हैं. दे आर गुड एट क्लाइंबिंग एंड नो अदर एनिमल कैन गो देयर ईजिली एज वेल एज गोट्स. गोट्स की तरह वहाँ पे कोई भी एनिमल ईजीली क्लाइंब नहीं कर सकता. दैट्स वाई दे ऑल द विंटर दे लिव इन द माउंटेन्स, एंड व्हेन द गेदर गेट्स वार्म दे क्लाइंब डाउन द माउंटेन एंड दे सर्च देयर फूड. Okay, come to the next page. Next page is winter coats. माउंटेन गोट्स हैव वेरी थिक कोट्स. अब माउंटेन गोट्स ने क्या पहना हुआ है? सॉरी, इनके पास क्या है? ये जो इनका जो वो है, आपको इनकी बॉडी के ऊपर जो नज़र आ रहा है, ये विंटर कोट्स हैं. अब इनके अब अल्लाह ताला ने इनको माउंटेन पे रहने के लिए बनाया है, तो इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और बॉडी के ऊपर जो ये वो है, इसको आप देखें तो ये वेरी थिक कोट है इनकी बॉडी के ऊपर. माउंटेन गोट्स है वेरी थिक कोट. देयर कोट्स हेल्प देम स्टे वार्म इन द कोल्ड विंड एंड स्नो. इनका जो ये कोट है, थिक कोट है, इसको हेल्प करता है कि ये विंड में और स्नो में सेफ रहे कोल्ड से. ओके, थिक कोट. द गोट्स आर सो गुड एट क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ देयर बिग स्ट्रॉन्ग हूव्स. अब अगर आपसे कुछ कोई पूछे कि वाई द गोट्स आर गुड इन क्लाइंबिंग, वाई? बिकॉज ऑफ देयर बिग स्ट्रॉन्ग हूव्स. The goats are good at climbing because of their big strong hooves.
And how's their hooves are divided? Each hoof has two parts. Each hoof has two parts. This help them the goats move safely on the mountains. Mountain goats have very thick coats. Their coats help them stay warm in the cold, winds, and snow. Thick coat. The goats are so good at climbing because of their big, strong hooves. Each hoof has two parts. This help them. Look at this. ये इनके क्या है, टू टू पार्ट्स है. ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि ये इजीली मूव करती हैं. Okay, so we have finished with the mountain goats. So you have to read it again and find out that how many answers and how many questions can you find out. If somebody asks you that write 3 or 4 lines about mountain goats, so you can first start that where they live. Mountain goats lives in the USA, in the mountains in the USA. Okay, so if somebody asks you that in which thing mountain, you can also write that mountain goats are in climbing. Okay, and we can also write that mountain goats live in the mountains in all the winters. And second thing, mountain goats climb down the mountains to look for food when the weather gets warm. In the warm weather, they climb down the mountains for their food. Okay, and you can also write that they have thick fur which help to stay warm in the cold winds and snow. Okay, and how they can climb tree and how they can climb mountain easily. They can climb, and why they are good at climbing? They are good at climbing and they can climb on mountain easily because of their big strong hooves. आई होप सो यू हैव लाइक द वीडियो. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट के ज़रिए बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है. लाइक भी कर दिया करें और साथ में शेयर भी. अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोज़ मज़ीद मिलते रहें तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी. थैंक यू.